humbled by their presence on the International Fab Talks. So it's a moment of joy when they accept the invitation to the International Fab Talks with the sole intention to create awareness and, of course, focus on the unsung heroes and learn a lot from one another. Join us, friends, to welcome our celebrity guest for today. He's a wonderful soul. He's here with us and ready to share his journey and to inspire us in the right way, to create awareness and to bring about balance in the lives of one and all. It's none other than Wasim Tahsin Qureshi, who's joining us all the way from the lovely city Mumbai, Maharashtra, India. Hello, sir, and welcome to the session. Thank you so much for being here with us. Hello, Andrea ma'am, and thank you for this opportunity. And I'm very much glad to be sharing my journey, my ups and downs, and all the things. So let's see how it goes. Thank you very much once again for inviting me to Fab Talks International. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Wasim Tahsin Qureshi. Thank you very much. I go ahead and share your profile and we begin the session. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. So friends, as I usually do this on the International Fab Talks, at the start of the session, I share the profiles of all the celebrity guests. And today our celebrity has agreed to be with us. He's none other than Wasim Tahsin Qureshi. He is a wonderful preacher. He connects with the Almighty in the right way. And at the same time, he is the founder of ISA India. And he's a Google certified digital marketer. I really am amazed with his content and the way he works. And I would love him to be connected with all of you and with me too, because his work is really exquisite. I add more to my sir's profile. Let's get to know more about him before we begin the journey deep into understanding it from his side. Defying limits, inspiring hearts. Meet our wonderful guest today. He's none other than Wasim Tahsin Qureshi, the specially able Dystrophy digital warrior empowering lives. Prepare to be moved as we shine a light on this extraordinary journey of Wasim Qureshi. With unwavering determination, he fearlessly navigates the digital landscape, defying societal norms and campaigning inclusivity. Through his inspiring content, he breaks down barriers, sparks excellent conversations, and uplifts hearts around the world. Follow his incredible journey as he spreads awareness today on the International Fab Talks. He advocates for equal opportunities and proves that true strength knows no boundaries. I love this, and I'm going to use this in further sessions as well. The true strength knows no boundaries. This is very true. Join the movement and let's celebrate the power of resilience together. I would like to add a little more to Sir's profile. He works as a digital marketer, a consultant, and a preacher of religion out of both passion and profession. His area of expertise includes affiliate marketing, social selling, and as I earlier mentioned, he is a Google certified digital marketer with over 7+ years of experience in YouTube growth and administration. He has also been a social seller with Oriflame India since July 2020, and he's an Amazon influencer as well. And born on Instagram, recognized creator. To put that right, he's also a wonderful social seller. If I'm mispronouncing anything, kindly forgive me. He is serving as a social media marketer and manager to mental health and mental health professionals. That's really nice to get it right. A manager to mental health, especially focusing on mental health professionals. Who are they? The psychiatrist, the psychologist, and as well as the periodontists. If you want to know who is a periodontist, a child dentist or the dentist that is specifically for children. Digitally across India, Wasim Tahsin Qureshi sees himself as a digital marketing and networking expert and an ally for uncommon disorders and a great supporter of both physical and mental wellness. As the proud founder of ISA India, a digital marketing portal, let me tell you what inspires him to do all of this. There's something beautiful. He says, when we are on the digital space, it is very easy to get your message to countless people across the globe. And I do agree with him on this. As a digital marketer and preacher with his knowledge in digital business or the online space, he has been able to contribute a lot and has tried and tested his business strategies for various people who have come to him and have taken his expertise or his services as a digital marketer. I would love you to define yourself or describe yourself. Who is the real Wasim Tahsin Qureshi? Over to you. Primarily appreciate your kind words, the way you put in everything. So
My name is Wasim Qureshi, and I'm born and brought up in Mumbai. My uh, parents are from Uttar Pradesh, which everyone knows. It is a very, I think it is a biggest state in India, Uttar Pradesh. So there is a what we call Sambhal Muradabad. It is very famous. So my parents are from there. But my father came to Mumbai in 1984, and I am born in 1992. So I am the eldest in my siblings. I have an elder sister. So basically that as ma'am asked के असल में वसीम कुरैशी कौन है? So I'm just a simple human being, and as a human being we all have our own uniqueness, though we all have two eyes, one nose and two ears, but we all have our own uniqueness. So I don't think that I have any kind of one thing that I would like to say, that I have embraced myself because I was diagnosed with muscular dystrophy, which I think around 11, 12 years when I was 7 on 8th standard. So gradually I have embraced myself, accepted myself. So I think that makes me unique. Or one thing I always say, that I am who I am and I embrace it. That's That's really nice. Thank you so much for sharing. Yes, sir. Would you like to add something more? Did I interrupt you? no, it's absolutely fine. So that I will say that was like God gifted or inbuilt. Like I like to share good things. So from there, it my journey started. Then when I was in ninth standard, so at that time I had to stop my studies. The reason being because of my uh, this treatment and all. Because one time from hopping from one hospital to another, going from one doctor to another. So what we decided, let's take a break of 1 year and fully focus on the health. So once we are being done, then we can continue. But I was not knowing that muscular dystrophy going to be kept on, like the weakness will keep on increasing gradually, and there will be a time that I will not be able to walk on my own, because till 2020 13 I was able to like walk slowly. If I'm able to keep my hand on someone's shoulder, I can walk slowly. I can stand on my own. But currently the situation is so coming back to your question, ma'am. Having said that, so why I took this path? So as I said that I was very much fond of sending messages and all. So I left the school, I think in 2006 or 7. Then we were shifted to another home. So at 2008 or 9, we all saw that that was a rage, and that was an increase in social media. Facebook have come. Everybody was creating Facebook and all. So I asked my mother in 2012 because as a preacher, there's a stigma that what a preacher is doing over here. It's like कि ये सारी चीजें बस ना दूसरे लोग करने चाहिए, preacher should not do them. So I asked my mother that can I create my Facebook so that I can, because that was a huge gap in between from 2007, because when I left my school, my all friends, and then I shifted to another place. So many, when I later my friends came to meet me, they said that Wasim, we went to your old house where you used to reside previously, लेकिन तू तो मिला नहीं है वहां पे. So well, in 2012 I created my Facebook and I reached out to my friends, school friends, some of them, and they were not aware that my situation has been reached at that extent that I'm not able to like walk and all as used to do previously. So that was the core reason, so that I can connect with my school friends and then all. And this is like hereditary. My parents, my mummy and my mummy and my papa, they both were very like a persona and very charismatic. If they had a chance to meet someone, they will quickly build some or the other relation and very good. So this is hereditary that have passed into, I can say, into the genes. So that thing I used my social media. One more thing I would like to add now, because at the years keep on say over the period of time, because of my mobility issues, because I have limited mobility issues. So social media was the best thing that I can connect with people. One thing I always say, that though I have physical limitations, I rarely go out of my house. Hardly I can count on my fingers in the overall period, 4 to 5 times in a year. After my parents passed away. Previously, I used to go like frequently.
all my studies and all of that's teaching study things and all. But currently, I just go 4 to 5 times a year out. Oh, that is only because of like going to salon or if sometimes we had to eye checkup and all. So that was a great thing that I have physical limitations, but digitally I can reach out anywhere. So I'm glad, and that is I'm not like होता ना कि हवा में बात करना. No, I am currently serving clients. One of my clients resides in Ahmedabad, one resides in Delhi, one resides in different parts of like one is near Mumbai. It's not coming. Yes, Yeah. sir. Thank you very much. That is well explained. You've explained that very well of how you're making use of the digital space. And I'm sure this is a message for everyone. I mean, irrespective of which location in India you are or the world, you can really connect to the digital space. You've made good use of it. And the best part is you explained like how you've evolved overcoming the challenges that you faced, right? Now, what I would Yes. like to ask you, Wasim Tahsin Qureshi, is there are several people out there who may be having a certain, special ability disorder, maybe, or something, or not able to do things in the right way. They need support and help and guidance from others, but they are still not okay with regard to their mental health. They are very, lost in their own thoughts of why me? Why me? Why not somebody else? Why is it me? So you are focused on mental health as well. Yes, what is the message for all those people who are specially abled? What is the clear message you'd love to give from your end? Because you've overcome that barrier, that challenge, and you're facing the world very bravely. Over to you. See, it's very easy for me to say, though I have muscular dystrophy, and I have no hesitation saying this that I am 32 years old and currently I'll be 33 in January, 7th of January. See, सबके साथ मुश्किलात होती हैं. We can't say there's no one in this whole world. I'll not say कि मतलब एक specific उसके लिए. No one can say कि 100% उनकी life पूरी की पूरी sorted है. So there will be always two options. I can give you an example. There will be either day or night. There will be either white or black. There will be either or there will always be. See, वो जो चीज है patience, it doesn't mean that you have to not embrace or surpass your emotion. For example, I am a muscular dystrophy patient. I can't walk. It doesn't mean that going into toxic positivity. Coming to towards your question, ma'am. First, I would like to add some brief. तो देखिए ऐसा होता है ना कि इट डजंट मीन कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्ग. यस, आई डू क्राई समटाइम्स बिकॉज बट दैट happens very rarely, very rarely. There are certain moment of my life when I felt के I wish I could, ये काश ये कमजोरी मेरे पास नहीं होती. Amongst that thing, when my father passed away, I was not able to, होता ना कि उनके उसको कांधा देना. Same happened with my mother. And when my niece was born, so I hope I had that strength कि मैं जाता. एक होता है ना कि न्यू बॉर्न बेबी हुआ हो आप जाओ देखने के लिए. So though everything was all that, मतलब I have my own power wheelchair and all, but उसमें एक होता है ना कि काफी दिक्कत हो जाती है. So coming to ma'am's question, see, to everyone, अगर मैं ये देखूं कि ठीक है मैं चल नहीं पाता, मेरा बॉडी वेट बहुत कम है, मेरे यानी कि मेरी स्ट्रेंथ बहुत कम है, मुझे अगर चार्जर पुल करना है मोबाइल के अंदर तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी. वेयर एज इफ आई लुक टू अदर एस्पेक्ट्स, मेरा ब्रेन सही है, आई कैन सेंस थिंग्स, आई कैन सी थिंग्स. देर आर सो मेनी पीपल के जो लोग देख नहीं सकते. देर आर सो मेनी पीपल्स एक जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, देन देर इज कलर ब्लाइंडनेस. एक वो होता है ना कि जो चीज मेरे पास में है, ठीक है, और अगर इसको और हम प्रैक्टिकली देखना चाहें, सिंपली टेक अ पेन एंड पेपर और आप राइट डाउन कि मेरे पास क्या क्या चीज है, कि मैं देख भी सकता हूँ, मैं सेंस भी कर सकता हूँ. एंड जस्ट 2 days बैक आई वाज टॉकिंग टू अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, जो हमें ये पता चला कि न्यू रिसर्च हैव बीन फाउंड दैट मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स में लर्निंग डिसेबिलिटी आ गई है. पहले ये चीज नहीं थी. पहले और ये सारी चीजें होती थी कि वीकनेस आ जाएगी सर्टेन पीरियड पे. वॉकिंग गेट एक होता है कि इनिशियली हम लोग टोज पे चलते हैं क्योंकि दिस इज ऑल मसल थिंग. मसल जैसे जैसे वीक होती चली जाती है वैसे वैसे बॉडी में स्टिफनेस आने लगती है. सो तो मैं ये देखूं कि कितने लोग ऐसे हैं कि
हम सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं, वी गो टू लाइक, और जो नेसेसिटी शोज होते हैं, डूइंग ब्रश एंड ऑल, देयर आर पीपल दे हैव टू गो टू डू द डायलिसिस। सो ये चीज अगर हम फोकस करें, अगेन आई विल से इट्स इजी फॉर मी टू से, लेकिन ये होता है ना कि ग्रेजुअली यू विल ऑटोमेटिकली फील कि हाँ ये दिस दिस इज रियली मेकिंग सेंस। सो इट्स ऑल अपॉन मी, या तो मैं, ठीक है मुझे एक चीज का दुख हो रहा है, मैं उसको एम्ब्रेस, मैं यानी कि एक्सेप्ट करूं, अपने इमोशंस को फील करूं, अगर मुझे रोना आ रहा है तो, लेकिन ये ना हो कि मैं रोते ही बैठ जाऊं, ठीक है ना। सो बीइंग अ वेटरन स्पेशली एबल पर्सन, और दिस थिंग वी यूज दैट इज नो डिजेबल्ड पर्सन, यानी कि डिजेबल्ड का मीनिंग होता है, यानी एक तरह से, इफ आई से इन उर्दू और अरबिक माजूर, यानी कि one thing that is, so it is not a very bad, because in our community many people not even like to be called specially able. I don't have any problem, whatever a person, until and unless they are not demeaning us, uh, they can either say disabled or specially able। तो आप बहुत सारी, जैसे cerebral palsy भी एक चीज होती है, तो आई एम रियली रियली ग्लैड, जैसे कि एज मैम वाज सेइंग के व्हाई मी, सी वी आर ह्यूमंस, हम लोग, वी आर नॉट गॉड, okay, we are humans, so rather than finding out and figuring out why me, and there will always be two things that I have learned very very many years ago। See, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, my dear and dear ones will, what will say, this is a test, why, because they love me। same at the same time, the people that एक होता है ना कि कुछ अगर दिल में they have malicious things, what they will say, oh what goes comes around, there might be something that he or she। So simple answer to this is, we see that a new by birth there are many babies के उनको कुछ issues हो जाते हैं। So this is not the thing as a human that we have to figure out कि why me, मेरे साथ ही क्यों हुआ ये वो। Always remember this is not the thing I am के again I'll say कि मैं हवा बात करूँ। We are being gifted with special abilities। See, one thing that is always said, मैम you would आपने भी सुना होगा कि मास्टर ऑफ ऑल एंड आई एम एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ मास्टर ऑफ, No, jack of all trades and master of none. master of none, yeah, this is very very true, but I would like to add, being a, as जैसे कि I said I am a veteran muscular dystrophy patient, I am very 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 good in multitasking, but yes, again I'll say I don't do multitasking in a manner के मेरे mental health पे टोल ले जाए या फिर मेरे physical, I in a very very balanced approach। So I have been gifted, I will say this is my, I'm able to learn things very quickly, I'm able to very grasping very, and there are some of languages अगर वो मुझे by heart करनी हो वो मुझे बहुत जल्दी याद हो जाती है। One is English, one is Marathi, and one is Arabic। When it comes to Hindi or Urdu, I don't know why वो मुझे याद करने में यानी मेमोराइज करने में टाइम लगता है, I don't know why। So there will the closing words will be my कि देखिए rather than figuring out के मतलब why me, and I will also like to add on this कि जो parents होते हैं they really play a very 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 crucial role। तो ठीक है, आपके बच्चे में मगर ये चीज है, आप, दुख होता है, डेफिनेटली दुख होता है कि दूसरे के बच्चे को जब हम देखते हैं, तो आप ये देखिए इस चीज को एक्सेप्ट करके जो जो चीजें आपके बच्चे में आप एम्ब्रेस कर सकते हैं, उनकी स्पेशल एबिलिटीज आप यानी कि, और वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आता है, तो वो चीज को आप धीरे धीरे जब देखना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली द पर्सन हु इज हैविंग एनी काइंड ऑफ रेयर इशू वो भी, और उनके जो भी पेरेंट्स है, प्लस देयर विल ऑलवेज बी, टुडे ओनली आई वाज सेइंग टू वन ऑफ माय क्लाइंट, हम लोग जब बैठते हैं व्हेन समवन इज कमिंग टू आवर हाउस टू विजिट, तो मतलब ऐसा होता है ना कि लोग ऐसे देखते हैं ना कि, एक होता है ना कि मतलब हम लोग उनके सामने है ही नहीं, नॉट एबल टू, मतलब पीपल ऑलरेडी दे कम विद प्री कंसीव नोशन कि ठीक है इनको डिजेबिलिटी है, तो ये तो, आई हैव बीन इवन आस्क्ड कि क्या तुम लिख पाते हो, क्या तुम कीबोर्ड भी चला लेते हो, ये देन ऑल थिंग, एंड दैट रियली हर्ट्स। सो आई ओनली से कि प्लीज डोंट फिगर आउट कि मैं ही क्यों, या फिर देखो मेरे सारे दोस्त है, वो दोस्त तो चल पाता है ये वो, आप अपनी उसमें ढूंढो, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, देन यू विल क्रैक आउट के व्हाट यू माय, आई हैव ओवर थ्रू, स्टिल देयर आर मेनी थिंग्स जो कि मुझे ब्रेक थ्रू करना है। To rightly put, I am very very good in networking, I have got a breakthrough in it, and I am very very
एक्सेलेंट इन एक्सप्लेनिंग थिंग्स। आप मुझे कोई भी, अगर आप चाहो ना कि मतलब ये प्रोडक्ट है किसी को सेल करना है, आप उसको मुझे पूरा ब्रीफ दे दो, आई विल मतलब बहुत अच्छे से उसको सेल आउट कर दूंगा। आई एम ऑलरेडी डूइंग दैट। तो यस। Wow, that's really nice. You've explained that very well, Wasim Tahsin Qureshi. You've done that. You've done a wonderful job. See, uh, you ask me to sell something, I'm very scared. I hesitate. I hesitate. I just think what the ये other चीज person will think about me, or I have all sorts of restrictions in my own head. I am not free from within. So it takes a long time for me to say that, yeah, I'm going to sell this product, and this is how. Not only me, there are several people out there, and so we have to learn the skill from you, how to network with people and how to sell. I think you have the skill, like selling sea sand on a seashore, right? या वन phrase I always use, selling without being salesy. Wow. Selling without being salesy, and I have learned that I always do this because अगर मुझे, I have to sell you something, but yes, in this I should be honest in my words. यानी कि regardless whether you purchase or not, first I will find is simply coming to the communicative things that I have learned. Think, feel, do. What I want you to think, what I want you to feel, then coming to the what I want you to do. For example, I have to sell you, let's say, for example, fitness gear. So I'll see, do you have interest any kind of fitness and all? Because there is no point in selling ice in the season, winter season, and there is no point in selling sweater in summer. Wow. There is no point. So first we have to find the match of interest. कि आपको क्या चीज पसंद है या फिर आप कहाँ. So as I was saying, selling without being salesy. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी को कोई चीज करनी है या ये बोलना है कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड स्टार्ट डूइंग सो एंड सो थिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पता है कि वन पर्सन वो हम बहुत जो है ना झूठ बोलते लाई करते हैं, तो सी ऑन द वेरी फर्स्ट गो मैं उनको सीधा जाके बोल दूं कि स्टॉप लाइंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, यू हैव टू स्टे, नहीं, until and unless that person वो मेरी बात को कंसीडर करते हैं कि नहीं. सो एज आई वाज सेइंग, सेलिंग विदाउट बीइंग सेल्सी, टू थिंग्स दैट वन हैज टू बी, इसके अंदर फ्लैटरी नहीं आनी चाहिए. एक होता है ना कि बटरिंग एंड मुंबई लैंग्वेज से मक्खन लगाना, और बल्कि ऑल ओवर इंडिया ही यूज होता है मक्खन लगाना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. यानी कि माय होल कॉन्वर्सेशन बस जो है ना, आई हैव टू जस्ट ब्रैग एंड्रिया मैम टू ऑफ दिस प्रोडक्ट. नो, if my work is to just recommend, now it's whole and soul upon Andrea ma'am कि वो उसको लेना चाहते हैं कि नहीं. Again I have to respect Andrea ma'am's decision because may be possible कि उनको इस चीज में यानी कि नहीं इंटरेस्ट हो, there might be any other thing, तो वो चीज होती है. So that one thing that I would like to say, selling without being salesy. Two things, just be yourself, be honest whatever you are saying, and again guide the way, guide people the way you want to be guided. I don't want, for example, if I want to sell a mobile, and do I want कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, प्रॉब्लम हो कि उसके अंदर कोई बैटरी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ, तो जो चीज मैं अपने लिए नहीं पसंद करता, why would I refer and recommend to someone else? So these all principles, and this actually I have been learned from my father, क्योंकि same principle I follow. And all one more thing, great thing is that I'm also a preacher. So I blend that preaching skills into my selling and all. So flattery should not be there, or buttering should not be there. You should be honest. Plus, it like in a very diplomatic way. For example, that's very, this been taught in a training that I did at Oriflame. For example, if I say this is a second hand car, तो इट साउंड लाइक समथिंग. इफ आई से प्री लव, चलो मैं कार के लिए नहीं यूज करूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ये को टर्मिनोलॉजी गलत या कुछ, बिकॉज एक होता ना कि दिस बॉय इज रॉन्ग एंड द सेम वे he has not this thing right. There is a huge difference in it. ठीक है. One more thing, for example, we say first copy. So if we say this near to original, so लिटिल टैक्सिंग, लेकिन ना इसमें ऐसा भी नहीं है कि इफ आई हैव सेड दिस तो ऐसा ही है. One thing I'm very much fond of, before analyzing or diagnosing someone's business or thing, this is all general, whatever I shared, this is all like on a general basis. So I actually go in depth
what I want to sell, to whom I want to sell. Then demographics come, the age group. This product is either for teenagers or 40 plus or 35 plus. So that's perspective. Excellent. That's really very interesting. Very interesting, Wasim sir. That's really great. What I'd like to know now, how people should connect with you if they want to avail your services, because you are a Google certified digital marketer as well. Like, how should people connect with you, either to be trained by you to become a digital marketer or to avail your services for the various things that they have in hand? It could be an entrepreneur, it could be a person selling a course, or it could just be someone who wants the expertise of a person like you. Over to you. This is a very nice question, ma'am. And it's like, this is the intention. This is the intention where I started, because I started my journey as an Amazon affiliate in 2017. Though I was very much familiar about it, I came to know about it from my younger brother, that there is something kind of affiliate that we get paid once the product is purchased by the third party and all. So I came to know about in 2015. Previously, as I said, that 2012 I started and all. So I was already fond of sharing messages and all. So I am very much good in drawing. So I used to create images, religious images, or like for example 15th August आ गया तो वहां पर इंडिपेंडेंस डे के मैसेजेस बना लेना, या फिर किसी को ग्रीट करना है, कुछ अच्छे पॉजिटिव मैसेज के हम सुबह में अगर उसको पढ़े. So coming back to your question, what people, so my core intention is, because see, having physical limitations, plus I'm not that efficient. If someone say कि चलो ठीक है तुम उठा के ये 50 किलो की चीज यहाँ से वहां रख दो, I can't do that. Plus if I मुझे अगर ऑफिस में जाके वर्क करना है तो ट्रैवलिंग दैट आई हैव, मतलब इतनी एनर्जी में कर, तो डिजिटल वाज द बेस्ट ऑप्शन के जो है आई कैन डू एट माय ओन पेस फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ माय होम. So my core intention when I started from, I transitioned from Amazon, I started from 2017. I did till the first lockdown, when there is Janta curfew announced by Prime Minister Narendra Modi ji. It was around, I think, March or April ending. So in affiliate marketing, I would like to give a brief, ma'am. I will come to your question. So जो आपने पूछा कि affiliate marketing में क्या होता है कि for example you are a seller and let's say you are selling, you have a business boutique, you have a boutique of dresses, let's say, ठीक है, western कुछ भी dresses हो, तो you hired me, then I will promote that until and unless I am able to make an order, then only you will pay. In between में ऐसा कुछ नहीं होता है. तो और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अच्छा ये होता है कि हमें प्रोडक्ट स्टॉक नहीं करना, हमें प्रोडक्ट, वो सारी चीजें एज ए सेलर यू विल टेक केयर. सो वंस द यानी कि बायर ने जो जिन्होंने खरीदा है दे हैव एंडेड, तो वहां पर वी गेट टू, तो ऐसा था. देन केम जनता कर्फ्यू. तो इट वाज अनाउंस ऑफिशियली अनाउंस बाय अमेज़न, क्योंकि एट दैट टाइम दैट वाज लाइक पेंडेमिक, ग्लोबल पेंडेमिक, बहुत सारे यानी कि मार्केट्स हिट हुए थे. तो अमेज़न अनाउंस के जो है ना, यू कांट प्रमोट. तो एट दैट पॉइंट आई फेल्ट कि काश मेरा भी अपना, अगर मेरा खुद का कोई ऐसा प्रोडक्ट हो. एंड आई वाज ऑलवेज, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली. इट्स नॉट कि अगर मुझे, यानी अगर मैं नहीं भी करता हूँ तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन व्हाई डू आई डू दिस? टू कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड. एक तो मतलब चलो अब पैसा वो सब तो आता है, लेकिन एक तो ना घर में बैठे बैठे इंसान वो हो जाता है. तो इट गिव्स मी वेरी वेरी गुड, यानी कि हमें सुबह उठना है कि ठीक है ये टारगेट पूरा करना है, नेक्स्ट डे ये क्लाइंट का ये तरफ से आया हुआ है. सो एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक कि अगर कुछ मिल जाता है, एंड आई, मुझे पता था कि मतलब अगर हमें किसी भी ब्रांड की डीलरशिप लेनी होती है, देयर आर रूल्स, और आई रिस्पेक्ट दैट कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, कि हमें एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ता है. फिर अगर आपको शॉप ओपन करनी है, दे विल विजिट एंड सी. So at that time, I got a message from a person who was already into Oriflame, and she explained कि मतलब ये Oriflame में you get the distributorship for free. But again, अगर मैं free बोल रहा हूँ, it doesn't mean कि मतलब वहाँ पर they provide the tools absolutely for free. All you need, आपका time और commitment चाहिए. आप जितना सीख सकते हो. What people make mistake over there, मैम, आज ही ज्वाइन किया और कल से दे बिलीव कि ये प्रोडक्ट है, एंड दे विल. हाउ am I able to start selling their? First thing first, एक कम्युनिटी होती है ना. इफ वी ओपन अ शॉप इन अ मार्केट, ठीक है, शॉप फर्स्ट दिन ओपन होती है, इनॉग्रेशन होता है, लोगों को पता लगता है ओ सो एंड सो, हमें मार्केटिंग करनी है, हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है. देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर आते हैं, कस्टमर देन दे बाय द प्रोडक्ट, देन को प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, दे विल कम बैक. सो दिस इज अ थिंग.
तो वहां से आई केम टू नो अबाउट ओरिफ्लेम, एंड ओरिफ्लेम के अंदर देयर वर like tremendous and amazing sort of how to sell products. And previously though मुझे यानी कि नेटवर्किंग अच्छी थी, लेकिन एक होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, इफ आई हैव टू सेल द प्रोडक्ट्स हाउ टू सेल, तो फ्रॉम देयर माय स्किल्स गॉट ब्रशन अप। तो वहां से फिर मैंने सोचा कि जिस तरीके से मुझे प्रॉब्लम है, एंड बिकॉज ऑफ माय फिजिकल एबिलिटीज आई वाज नॉट एबल टू डू माय स्कूलिंग, बाय बिकॉज आई नीड व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी एवरीवेयर। एंड आई ऑलवेज सी, अगर मुझे यानी कि कहीं पर भी जाना है, माई फर्स्ट वेरी क्वेश्चन इज के वो चीज व्हीलचेयर एक्सेसिबल है, दैट इज, क्योंकि उसके लिए उसके बगैर बहुत दिक्कत हो जाती है पूरा कैरी करना सब कुछ। तो ये चीज, तो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड कि मैं यहाँ से सीख के पीपल हु हैव सेम सॉर्ट ऑफ यानी कि क्रॉनिक इलनेसेस के, जो लोग घर के बाहर नहीं जा सकते या फिर किसी वजह से उनकी स्कूलिंग नहीं हो पाई थी, या फिर क्वालिफिकेशन जो कि मीट नहीं कर पाते हैं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये ब्रीफ देना बहुत जरूरी थी। तो दे कैन रीच आउट टू मी एट माय इंस्टाग्राम, ईजर इंडिया और वसीम कुरैशी, इट गोज विद लाइक द वसीम कुरैशी, दैट, एंड यस, from there I can, as I said, I consider myself as a networking ninja. तो आई वॉज ऑलरेडी हैविंग थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज कि ठीक है ये डिजिटल मार्केटिंग चीज होती है। आई केम टू नो अबाउट करियर कोच, हर नेम वॉज सुचिता दमेचा। शी हैज पोस्टेड ऑन her Instagram के 5 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एंड एज यू नो वहां पर क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे स्कैम्स भी हो रहे थे, तो ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, और डे टू डे बेसिस पे इवन आई रिसीव मैसेजेस एंड ईमेल्स कि ये कर लो। तो हैविंग वेरी मच डीप नॉलेज, मुझे पता होता था कि ठीक है ये इसमें इतने पैसे डाल के कोई वर्थ नहीं है। इफ आई एम मतलब पेइंग 10,000 तो उसका वर्थ भी होना चाहिए। सो फ्रॉम देयर दैट करियर कोच सुचिका दमेचा, आई केम टू नो कि एक कोर्स है दैट अ पर्सन कैन डू एब्सोल्युटली फॉर फ्री, that was previously it was known as digital garage of Google, now it's if I'm not wrong skill shop I think। तो वहां पे जाके anyone can do, but yes, again all you need to need कि आपको आपका टाइम और वहां पर कमिटेड करना होगा, क्योंकि इट्स ऑफ 40 hours of modules that one can do at their own pace. I myself did it took me around 1 year because मेरे साथ और भी इश्यूज होते हैं हेल्थ के, ये वो, तो इस तरीके से मुझे टाइम लगा। और फिर उसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं जो कि आप अपने घर के कंफर्ट से देख सकते हैं। हर मॉड्यूल के बाद में देर आर क्वेश्चन जो कि आपको कंप्लीट करना होता है, आंसर्स देने होते हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट मॉड्यूल अनलॉक होता है, दैट इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री। तो वहां से तो आपकी डिग्री आ जाएगी, ठीक है। देन एंड में आपको अबाउ 90% स्कोर करना होता है। माई फर्स्ट अटेम्प्ट में 75-80% मेरा हो गया था मैम। देन आई हैव टू, आफ्टर 24 hours यू कैन री अटेम्प्ट इट। तो 24 hours के बाद में मैंने दोबारा री अटेम्प्ट किया। देन ग्लैड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी 90% मैंने स्कोर कर लिया। आउट ऑफ 40-32 आंसर्स आपके होने चाहिए। देन फिर आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, उसके ऊपर आपकी आईडी होती है, सो दैट फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कि आई एम अ गूगल सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर, तो डेफिनेटली कि इफ समवन आस्क के भाई व्हाट्स द प्रूफ, तो दे कैन सिंपली क्लिक ऑन दैट लिंक, वहां पर लिंक प्रोवाइडेड होती है, वहां पर मेरी आईडी इफ दे तो वो आ जाता है। तो anyone can who are interested के मतलब डिजिटल मार्केटिंग, देन अगेन फिर वहां पर आगे दे कैन बी अ सोशल मीडिया मार्केटर और सोशल मीडिया मैनेजर। एज आई वाज सेइंग आई हैव बीन गिफ्टेड, सो आई एम सोशल मीडिया मार्केटर एज वेल एज सोशल मीडिया मैनेजर एट द सेम टाइम, which happens very rarely, मतलब ऐसा होता है। प्लस आई एम मेनी थिंग्स गो हैंड बाय हैंड। फॉर एग्जांपल इफ यू आर जैसे अभी आप फैप टॉक पे आप बात कर रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली क्रिएट पीपीटी, बट आप सोनली पीपीटी क्रिएटर नहीं है। योर मतलब जो भी आपकी मतलब क्वालिफिकेशंस होगी वो, तो वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग एंड ऑल दैट गो हैंड इन हैंड। So if someone asks, yes, I am a video editor too. If someone asks, yes, I am a great image creator too. तो वो चीज भी होती है। So this is the best thing for, I even say, for homemakers. So I always prioritize opting or having given opportunity जिनको प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इन द सेंस मतलब वो, दिस इज नॉट इन द सेंस ऑफ मीन डिमीनिंग अदर्स, के मतलब मोबिलिटी इश्यूज है कुछ, दे कैन सिंपली ऑप्ट इट फॉर, एंड गाइडेंस के लिए आई एम देयर, आई ऑलरेडी डू, देयर आर मेनी पीपल आई हैव। देन फिर दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट, एंड देन के किसी के साथ में ऐसी कुछ आई विल बी लाइक मैं अच्छा ही एक इंटेंशन रखूंगा। लोग कंटिन्यू नहीं करते क्योंकि कमिंग फॉर बिजनेस बैकग्राउंड आई नो, क्योंकि
होल ईयर आपको ऐसा है कि मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि देयर विल बी नो क्लाइंट्स. So I started when I was started till 3 months. It was like one way talk. Only you are the person talking on a call or a gramophone. But after 3 months, as I was like positioning myself, as you have seen on my easier account, कि वहाँ पे networking करना, इस तरह का content post करना. Over the period of time, now it's like if someone approaches me, I have to see कि मेरे पास में मतलब टाइम स्लॉट्स हैं कि नहीं. एंड आई एम ग्लैड टू शेयर कि आई एम नॉट, पहले आई वाज डूइंग ऑल अलोन, क्योंकि मैं वेट कर रहा था सो दैट माय वर्क गेट एक्सपांडेड, सो कि मैं पेड बेसिस पे मतलब टीममेट रख के आई कैन डेलीगेट माय वर्क. सो नाउ वी हैव ग्रोन. मुझे एक और टीम मेंबर आ गया एंड फ्रॉम 1st of November वी विल बी टीम ऑफ 3 पर्सन. दिस में साउंड फॉर पीपल कैन, एज वी आर जस्ट स्टार्टेड. I will still considering, though I'm doing this from long. I'll say कि we are just started. There is a lot more to do. ऐसा है. So yes ma'am. Anyone can मतलब जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है वहां से करके, then there is Coursera also, then there is Allison courses also, then there is Future also. ये सारी चीजें they can simply reach out to me and I'll be glad to share all these things. Excellent, excellent, Doctor. Excellent, Wasim sir. You've shared that so well. That's really very nice. Thank you very much. You've given us a nice introduction into how you were into it, how you took it forward, and you're very genuine and honest when you're sharing. You know, that's as you've said, makkan nahi lagana, जो है सच्चाई वही सच्चाई सामने दुनिया के सामने रखनी है. आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाने का मौका देना है. ये बहुत अच्छी बात आपने कहा. बहुत अच्छा लगता है हमें आप जैसे लोगों से मिलना, आपके मन की बात जानना. That's really nice. Now, I'd like to know if can you train personally? You have already all the experience of the digital world in with regard to marketing and etc. etc. Now, somebody wants to learn it from you. Are you ready to train them instead of them taking up the course and all like and going through those that pattern? Are you ready to like take a one-on-one session? They will pay you for it and take a one-on-one session where you will train them how to do it because you're a master and a pro in that. You said you are a ninja at that as well. I'll like to share first this ninja thing. Actually, I consider Dr. Aradatta as my elder sister, and she's a very, very gem of a person. बहुत ही kind है. So she considers herself as a mental health ninja. तो वहां से मुझे ना एक आया. और whenever someone जो मेरे को reach out करते थे, मुझसे कुछ पूछते थे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में या फिर वसीम ये चीज कहाँ होगी, टूल्स एंड ऑल. तो दे यूज्ड टू से, मतलब एक होता है ना कि कंबाइंड तरह के आंसर्स मिलते हैं. यू आर अ जीनी, यू आर अ दिस. तो मैंने बोला कि चलो मैं भी अपने लिए ना एक निंजा, नेटवर्किंग निंजा रख लेता हूँ. So as your question, ma'am, that I am glad and privileged that I already do. Oh wow. But yes, as learned from coaches, when we see it's free, there are, I will not say not no one, but I will say not everyone will there Appreciate. इसको ग्रांटेड नहीं लेंगे. फॉर ग्रांटेड मतलब लेने वाले बहुत होते हैं. सो यस, आई ऑलरेडी हैव डिड. तो मैं वहां पर क्या करता था ना, क्योंकि आई नो अगर वो इफ समवन हैज रीच आउट टू मी के वसीम आई वांट टू डू दिस कोर्स, ठीक है, तो रादर देन जस्ट सेइंग कि ठीक है ये कोर्स है तुम वहां जाके कर लो, बिकॉज आई नो वो नहीं करेंगे. तो व्हाट आई डिड कि ठीक है, simply give me your email and all. So I created the account on their behalf and then I shared this is the first module. You have to see this video and answer this. For rest of the thing I am there. For example, अगर उनको ये चीज सीखनी है, ठीक है, there's a terminology called KPI, key performance indicator. What is this? For example, there's a gym trainer और उनको 50 न्यू जॉइनीज ऐड करने हैं. तो इसको एज अ डिजिटल मार्केटर और एज अ सोशल मीडिया मार्केटर हम ठीक है उसको ट्रैक करेंगे कि ठीक है अगर 50 जॉइनीज चाहिए तो ये लोग कहाँ पर, व्हाट काइंड ऑफ उनका हीरो कोर्सेज कितना है, देन यानी गोइंग इनटू डेप्थ. तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ मेजर, एक टूल होता है जैसे कि हमें कपड़ा नापने के लिए भी यूज दैट मीटर और उसको स्केल को नापने के. तो दिस इज द इंडिकेटर. जिस भी चीज से हम उसको करें दैट इज कॉल्ड केपीआई. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन मैम, कि ठीक है जो भी चीज आपको टर्मिनोलॉजीज नहीं समझ में आएंगी तो आई एम ग्लैड. तो इस चीज से क्या हुआ, सम ऑफ द पीपल दे डिड दैट. सो एज यू वर सेइंग के डू यू ट्रेन, यस आई ऑलरेडी डू. एंड वन ऑन वन थिंग एज आई वाज सेइंग के प्रीवियसली आई हैज टू जस्ट के मतलब अगर किसी को वो चीज लेनी है तो they simply call me and I without charging, and I am glad that I did with my own wish. मुझे कोई इस बात में वो नहीं है.
लेकिन यहाँ पे फिर दो चीज हो जाती है, देर आर ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल एंड इट इज जस्ट सेड के डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन पीपल डू जज। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूँ ठीक है हाफ एन आवर के इतने होंगे, तो देर आर पीपल, अरे हाँ ये दिस पर्सन इज चार्जिंग सो मच, के मतलब कुछ तो होगा। तो यस, that is in the pipeline के I will be taking calls on paid basis, but yes previously जो कि मैंने लिया है कि मतलब that depends upon my mood, अगर मेरा मूड है तो I will not charge anything, but I will guide, मैं मतलब आए दिन किसी न किसी को कि ठीक है कीवर्ड्स क्या रखने चाहिए, हैशटैग्स क्या रखने चाहिए, अगर उनका अभी बिजनेस है तो उनको एड कैंपेन रन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देन देयर इज टू टाइप्स ऑफ एड्स, कि बूस्टिंग करनी चाहिए या फिर एड को कैंपेन में रन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। दैट आई ऑलरेडी डू एंड आई एम बीइंग प्रिविलेज्ड। व्हेन आई स्टार्टेड एट ओरिफ्लेम, तो वहां पर सारी ट्रेनिंग्स मैम इट्स प्रोवाइडेड फॉर फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। अब आपके ऊपर है कि आप कितना उसमें से मतलब सीख के इम्प्लीमेंट करके उसको बूस्ट करना चाहते हो। तो आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि मैं भी जो है ना मंथली बेसिस पे आई विल कंडक्ट अ वर्कशॉप, सो दैट क्योंकि देयर वर पीपल दैट वाज मैनी पीपल के जो इस तरीके से लॉकडाउन में करते थे। तो मेरा एक होता है ना कि ये इनबिल्ट है कि एक होता है ना कि दिए से दिए आप जलाते चले जाओ और रोशनी बढ़ती चली जाती है, और आपके दिए में भी कोई कमी नहीं होती। तो वो चीज थी, बट आई वाज प्रिविलेज ऑन 16th ऑफ अप्रैल। मतलब मेरी इंटेंशन तो ये थी कि आई विल बी डू विदाउट एनी मॉनेटरी गेन, बट आई वाज ग्लैड देयर इज अ, you might be knowing Dr. Pritika Gonsalves. She's a child psychologist and a founder of Mind Basket India. She told K Wasim, can you do a workshop on in collaboration with us on psychology of digital marketing? So it was a 2 hours workshop and it was on paid basis, ma'am. And I was like on cloud nine, बल्कि से on cloud seven. Okay, my first ever workshop was on paid basis and बहुत अच्छे से वो thing. So yes, I do train people. I do have in Oriflame we have to coach. For example, we are also being have that authority. We can also provide that distributorship to others. लेकिन वहाँ पर ही पूरा काम खत्म नहीं हो जाता. We have to guide them, setting up their storefront, setting up their, for example. And I am, as I consider myself in networking ninja, मतलब I am good in objection handling. फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि समवंस पेमेंट गेटवे इज नॉट वर्किंग और किसी का कुछ प्रोडक्ट था वो कहीं और चला गया, सो दैट इज लॉट ऑफ मतलब कि ना पेशेंस चाहिए होता है। तो एक होता है ना कि वसीम इतना पेशेंस तुम्हारे अंदर कहाँ से आता है, तो पेशेंस कहाँ से आया कि मुझे भी नहीं पता था कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मैं मतलब नहीं चल पाऊंगा। कि बचपन से होता था, एक होता ना ड्रीम क्या है, ड्रीम ये थी कि पापा का वी हैव अ रिसाइकलिंग बिजनेस, पापा का बिजनेस है, आई विल सिंपली डू प्लेन ग्रेजुएशन एंड कैरी फॉरवर्ड विद माय फादर्स बिजनेस। कभी नहीं ये पता था। और हमारे टाइम पे करिश्मा बाइक अच्छी आई थी, वो टाइम पे इतना क्रेज इतना नहीं था स्पोर्ट्स बाइक का जो आज है। तो आई विल से कि मेरा ये था कि चलो करिश्मा अच्छी सी बाइक लेंगे या नहीं सो, लेकिन एक होता है ना डेस्टिनी में कुछ और था। तो वहां से लोगों का चाइल्डहुड खेलने वगैरह में जाता है, हमारा चाइल्डहुड मतलब फिजियोथेरेपी में इधर उधर मतलब कभी, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी एट दैट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग द रेशियो उसका जो था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज के मतलब लैक्स में कुछ लोगों को होती थी। रिसेंट रिसर्च इज के मतलब 10,000 है कितने में 4 5 होती है थी। तो एट दैट जब मुझे डायग्नोसिस थी तब था सो मच ऑफ रेयर। तो कितने तो मतलब ऐसे थे कि मैंने यानी कि जो आई विल नॉट से मतलब नॉट डिमीनिंग कि किसी डॉक्टर को जैसे बताना होता था, तो अगर उन्होंने कोई स्पेशलाइज कोर्स नहीं किया होता था तो उनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी पता भी नहीं होता था कि उनको खुद हमें समझाना होता था कि वो, तो वहां पर से फिर एक्सपेरिमेंट ही होते रहते थे, जिस डॉक्टर के पास जाओ कोई ये चेकअप करा रहे कोई वो चेकअप कराते। तो वहां से फिर ये पेशेंस आ गए। तो एज आई वाज सेइंग कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो इतना मैं पेशेंस से किया होता हूँ, ईमेल करना फिर वो करना एंड बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से आई डू ट्रेन फॉर पीपल, अगर उनको मतलब प्रोडक्ट सेलिंग का सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग का सीखना है, इफ दे वांट टू बी सोनली ऑन देयर ओन कि मतलब किस तरीके से पिचिंग करनी है, दैट ऑल आई डू दैट। Excellent, excellent. Thank you very much, Mr. Wasim. You've shared that so well. That's really very nice. Now, one last question I'd like to ask you is like, what is the message you have to give to the world? We are requesting you to join us in the second session as well. We would love to have a second session with you as you focused on like the psychology of digital marketing, and I also want you to give us an exclusive session where you would focus on what is muscular dystrophy and how
one could go with the treatment, how one could build resilience. I want a session from you on that as well. If you agree with it, Yes, we can we'll do. I discuss am that. in India. I can say I am the person this doing since from 2017, and I am glad that I have मतलब बहुत सारे doctors they came up and they without anything in return, because in influencer, if you, I am myself an Amazon verified, previously it was verified, now that check mark all that is gone due to the new terms and conditions. So for a story, if I we ask someone to, they ask for charges, but I am so glad that many doctors like Dr. Aradatta, then Dr. Garima Malhotra, then please audience forgive me अगर मैं आपका किसी का नाम नहीं ले पाऊँ, तो बहुत सारे डॉक्टर्स व्हेन मस्कुलर डिस्ट्रोफीज अवेयरनेस डे इज 7 सितंबर ऑफ एवरी ईयर, अभी सितंबर में वो चीज गई है, एंड हर ईयर देयर एवरी ईयर देयर इज अ थीम, सो इस तरीके की थीम होती है. So this time I forgot totally what it was, like breaking barriers or something. Well, as जब हम प्रॉपर उस पे यानी कि सेशन करेंगे, we can add to that, you can trim this part. तो उसके अंदर था, तो I do whatever, मतलब जो भी मेरे से पॉसिबल होता है, and I am always being said कि please Wasim start making your own videos, क्योंकि I am very much excellent in explaining things. So last message ma'am I would like to give, see लाइफ मतलब जो है ना किसी के लिए भी एक जैसी नहीं होती है, प्लस अगर किसी भी चीज की अगर आपको प्रॉब्लम आ गई है, कोई रेयर इश्यू हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो ऑलवेज सी एज आई वाज सेइंग कि ठीक है, एज अ मस्कुलर डिस्ट्रोफी पेशेंट आई कांट वॉक, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई कैन डू, बट व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन डू, आई कैन स्पीक, आई कैन सी, आई कैन फील, and if I do exercises, though there is like 0.001% of growth, still there is growth now, there is always light at the end of the tunnel. Again I'll say But it's easy for me to say ठीक है आपको दुख हो रहा है आप रो लीजिए, लेकिन उस चीज को ना लेके मत बैठे. यस ठीक है, दुनिया में ना इस तरह के लोग हैं कि जो ना आपकी डिसेबिलिटी को लेके आपका मजाक बनाएंगे. इवन आई एम माई सेल्फ, मतलब बीइंग, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं अपना स्कूल 15 मिनट्स अर्ली जाता था, एंड एज यू कैन, मतलब आप सोच सकते हो कि एक बच्चा 15 मिनट पहले, मतलब वो टाइम पे तो बच्चा ही होता ना कि इंसान को कहाँ इतना मतलब प्रेशर में, सबका जो भी प्रेशर है, मेरा प्रेशर ये रहता था कि भाई मुझे 15 मिनट पहले जाना है, सो दैट अगर कोई मुझे चलते हुए देखे मुझे टीज ना करे. ठीक है, दुनिया, वर्ल्ड इज नॉट फेयर विद एवरीवन, मतलब लोग, लेकिन हाँ कुछ मेरे ऐसे अमेजिंग अमेजिंग दोस्त थे जो आज भी हैं, कि ना उनको मतलब ना उनको बस ये था कि वसीम को वो कुछ बोलना नहीं चाहिए, दे वर स्टिल दे, मतलब वो अगर कोई किसी ने बोल दिया ना तो मतलब वो लोग एकदम खड़े हो जाए. तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपकी डिसेबिलिटी का अगर कोई मजाक बना रहा है, तो देयर विल बी पीपल जिनको आपकी डिसेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होगा. टुडे आज ही दोपहर में मेरे एक जो क्लाइंट है, शी इज अ वुमेन स्टार्टअप कोच, तो उनको मैं कहता हूँ, दे नेवर एवर, मतलब उनको कोई लेना देना नहीं है कि मतलब मेरी प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, दे नेवर, मतलब कभी ऐसी कोई चीज होती है कि जिससे मुझे ना मेरे को ये हो कि काश यार ये चीज नहीं, they always look upon to my ability and मतलब and they still I we मतलब हमारे साथ जोक बोलते हैं to my clients के they tolerate me, क्योंकि as a person मतलब patient, मतलब मैं things as compared to others slow करता हूँ. तो that would be my last message कि life जो है ना क्या लेकर आए किसी के लिए कुछ नहीं हो. There is so much going on into the world, जो कि हम अपने न्यूज वगैरह में भी देखते हैं कि इस पार्ट में ये हो रहा है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं पर कुछ इस तरह की चीजें होती है, कॉन्फ्लिक्ट चालू है, बॉम्बिंग ये वो. तो अगर हम ये चीज देखेंगे ना कि ये चीज मेरे पास में है, तो ऑटोमेटिकली आपको ना अच्छा फील होने लगता है कि ठीक है मेरे पास में अगर ये मोबाइल है तो ना, देयर आर सो मेनी पीपल. इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी में चले जाओ, ठीक है ना. टॉक्सिक पॉजिटिविटी, आई एम टोटली अगेंस्ट टॉक्सिक पॉजिटिविटी. एक उसमें वही होता है कि जो भी चीज आप फील कर रहे हो, ऑल इमोशंस आर वैलिड, उस चीज को फील करो, लेकिन एट द सेम टाइम ग्रोथ की तरफ, आगे बढ़ने की तरफ आप वो चीज रखो, ठीक है ना. और बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है ये तो बैठ के बोल रहा है, तो कम ज्वाइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम या फिर जो भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप आ जाइए. मतलब आई एम थिंकिंग कि काश मैं, आई मे बी फ्यूचर प्लान तो है कि मैं अपना डे रूटीन का जो डॉक्यूमेंट होते ही है, क्योंकि देर आर पीपल के जिन्होंने जो मेरे को वन ऑन वन मीट यानी मिल चुके हैं, ते कम, मतलब देर आर पीपल के जो मतलब होता है ना कि जो खुद दुखी होते हैं, जब वो मुझसे मिलते हुए जाते हैं तो बहुत अच्छी वाइब्स लेके, कितने ऐसे होते हैं जो टेंस्ड होते हैं बहुत अच्छी वाइब्स लेके जाते हैं. आई डोंट नो दैट्स मतलब दैट्स बीइंग गिफ्टेड बाय गॉड,
कि एक अच्छा और एक बढ़िया वो है। Yes, Mr. Tahsin, let me put that right. Thank you so much, Mr. Wasim Tahsin Qureshi. Thank you very much for your time. Looking forward to many more interactions with you. You have a wonderful way of reaching out to the world, networking, sharing your thoughts and views. I would love to take some more time of yours, but I'm sure you will share some more time with me in the next 2 sessions, which I've already requested you for. Thank you so much. Stay connected and stay blessed. We are with you, and we will share the way people could reach you. I mean, we'll share your details in the description when we share this video, how people could reach you and avail your services, and for their good, because many of them would love to grow on the digital space. Yes. Thank you very much, Mr. Wasim. We'll definitely get connected with you, and would love many of the people to get connected with you. We'll share all your details where people could connect with you in the description when we share this video. Thank you so much. Thank you very much. And one last thing, there is the habit of my मैम, अगर कोई भी चीज ऐसी है कि मतलब आपने पूछी रह गई या फिर कुछ पे knowingly or unknowingly and my words have hurt you, please very sorry for that. तो ऐसा है. You have been a wonderful soul on this platform. Thank you so much. You've been a very polite person. Okay, ठीक है. Okay, ma'am. Thank you. Can I leave? Yeah, just a second, sir. Yeah, ma'am. So, dear friends, with this, we come to an end to the International Fab Talks for today. I'm sure you like this session with our celebrity guest. He is none other than Mr. Wasim Tahsin Qureshi. We would love you to connect with him with regard to the work that he does and the way he conducts the various sessions for the clients in order to uplift them or to make them feel comfortable on the digital space. And with this, we'd like to sign off now from the International Fab Talks. If you like what the International Fab Talk team is doing, stay connected with us. Like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. And above all, stay connected, take care of yourself, and never ever wallow in self-pity. You have to work on yourself, and you have to thank the Almighty for the various gifts that He has given you. Stay safe and stay connected. Thank you so much, sir. Most welcome, ma'am. Thank you. Thank you so much.